ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna. I welcome all of you. I think someone's audio is on, so please everyone, please mute. Hare Krishna. So I welcome all of you to our combined class. We wanted to have some discussion. That's why we have called for a combined class. Yes, Kushal Vihari Prabhu, is it required for everyone is comfortable with English, or do you want translation? Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी कंफर्टेबल है इंग्लिश में, ठीक है? Okay, how many of you are not comfortable in English and you need translation? कितने लोगों को ट्रांसलेशन की जरूरत है? Huh? Okay, some devotees need translation. Okay, so Kushal Bihari Prabhu will translate. Yeah, okay, we don't have to start a poll. We'll do some translation because class will be very simple. So I welcome all of you. We are all practicing Krishna consciousness and bhakti to develop love for Krishna. हम सभी भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं ताकि हम भगवान के प्रति प्रेम को विकसित कर सकें. And that is actually the goal of our life. और ये हमारे जीवन का लक्ष्य है. Many of our acharyas have spoken about what is this love for Krishna. हमारे बहुत से आचार्यों ने इसके बारे में चर्चा की है कि भगवान के प्रति प्रेम का क्या अभिप्राय है. They have explained how this love for Krishna is actually our real wealth in life. उन्होंने बताया है कि ये भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह हमारा असली धन है. Of so many things I have learnt about this wealth of love for Krishna. One song which really has been from my childhood very, very dear to my heart is a song by Mirabai. और जितने भी मैंने इस धन के बारे में जो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है उसके जितने भी हमने भजन सुने हैं उनमें से सबसे प्रिय भजन मीराबाई का एक भजन है जो मैं बचपन से सुनता हूँ. There is a message that the voice is very low. I think you have to increase the gain. Hare Krishna. Am I clear to everyone, or someone is telling that the voice is low? Yes, Okay. Hare Krishna. Is it clear now?
Shall I speak more loudly? Hare Krishna. We have increased the gain. Okay. So, Mirabai, in a song which is very, very famous, sung by many singers, made into so many Bollywood music channels and everything, has written the essence of this wealth of love for Krishna. तो मीराबाई का ये जो भजन है, जिसके ऊपर बॉलीवुड में बहुत बड़े बड़े म्यूजिक एल्बम भी बने हैं, वो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जो सच्चा धन है, उसके सार को वो बताता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो. She says that I have got somehow or other the special wealth of love for Krishna, love for Ram. वो कहती हैं कि मैं इसी प्रकार से मुझे ये विशेष धन प्राप्त हो गया है जो भगवान कृष्ण, भगवान राम के प्रति प्रेम है। पायो जी मैंने I have obtained somehow or other the special wealth of love for Krishna. इसी प्रकार से मुझे भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी धन प्राप्त हो गया है। And then she says how she has obtained this special wealth. फिर वो बताती हैं कि किस प्रकार से उन्हें यह विशेष, because generally if we tell someone that I have got some wealth, I have got some wealth, I have got some wealth, then everyone gets eager. Who doesn't want wealth in life? Is there anyone in this, whoever all have you joined, you don't want wealth? क्योंकि आमतौर पर यदि आप किसी से कहते हैं कि मुझे बहुत संपत्ति मिल गई, बहुत धन मिल गया है, तो सभी लोग पूछते हैं कि कैसे, क्यों आप में से किसी को भी धन नहीं चाहिए क्या? Everyone needs wealth. सभी को धन की आवश्यकता है। And whenever anyone says that I have got some wealth, people want to know what is that wealth and how to obtain that wealth. और जब भी आप बोलेंगे कि मुझे संपत्ति या धन प्राप्त हुआ है, तो लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे कि वो धन क्या है और कैसे आपको प्राप्त हुआ है। So she says that Vastu Amolika, this wealth is very, very special. This wealth is priceless. Amolaka. Molaka means value. Amolaka, it has no value. No one can compare. Nothing can compare with this wealth. तो कहते हैं ये एक बहुत ही विशेष धन है और यह अनमोल है। कोई भी धन, कोई भी संपत्ति इससे तुलना नहीं की जा सकती। Vastu Amolaka di mare Sadguru. And my spiritual master has mercifully, kripa kari, Vastu Amolaka di mare Sadguru, kripa kari. With great mercy, my spiritual master has bestowed me this special, priceless gift of wealth of love for Krishna. और मेरे सद्गुरु ने कृपा करके ये जो विशेष जो धन है, विशेष संपदा है, ये मुझे प्रदान की है, जो अनमोल है। Apanayo. And when my spiritual master gifted me this special wealth, I actually gracefully accepted this wealth. और जब मेरे गुरु ने मुझे ये संपदा दी, तो मैंने बहुत सम्मान के साथ उसको स्वीकार किया है। And then the natural thing, oh, you got from your guru this wealth, and you say that anyone can say what wealth I have is most priceless, but you need to define what is the speciality of this wealth. तो ये स्वाभाविक है कि जिसके पास जो संपदा है उसको विशेष लगेगी, लेकिन आपको ये समझाना पड़ेगा ये संपदा विशेष कैसे है। And then in the next 2-3 verses, Mirabai explains what is so special about this wealth of love for Krishna. Why it is so priceless. Why when we get it, it is called mercy. तो मीराबाई अगले 2-3 बंदों में कहती हैं कि कैसे ये जो संपदा है ये विशेष है, कैसे ये अनमोल है। And why
when we obtain it, it is called as mercy. और क्यों जब इसको प्राप्त किया जाता है तो इसको कृपा क्यों कहा जाता है? The first principle Mirabai explains is janama janama punji pai jag mein sab khwayo. She says that this wealth is so special that you can obtain this wealth that you have accumulated in previous lives also, and you can access it in this life, all the wealth that you accumulated in previous life. तो मीराबाई कहती हैं कि यह जो ऐसी संपदा है कि आपने जितना भी पूर्व जन्मों में पुण्य कर्म किया है उसको पुण्य कर्म? मिलाकर, I didn't say pious activity. Please translate carefully. Hear attentively. Please repeat, Guruji. So she says that janama janama punji, whatever wealth of this love for Krishna I have acquired from lifetimes after lifetimes, I can access in this life. तो ये जो संपदा है अनेक अनेक जन्मों में इस पूंजी को मैंने संचित किया है और इस जन्म में ये मुझे प्राप्त हुई है. So the first thing, okay, that the characteristics of this wealth is that it can be accessed from lifetimes. We can access this wealth from lifetimes of the lifetimes. And she says that the wealth of this world, jag mein sab khwayo. If any wealth of this world, Hare Krishna, there is some sound, please mute. Any wealth of this world you will lose in this life itself. But this wealth has a speciality that it can be accessed from lifetimes. तो पहली जो वस्तु है, पहली जो विशेषता है वो यह है कि इस संपदा को जन्म जन्म तक आप, अनेक जन्मों तक आप इसको प्राप्त कर सकते हैं. बाकी सब जितनी भी पूंजी है केवल एक जन्म में आप उपयोग कर सकते हैं, बट इसको आप अनेक जन्मों में भी. One may be a crorepati in this life, but when he dies, next life he may be born as a beggar, and he cannot say, I was crorepati of India. तो एक कोई करोड़पति हो सकता है वो, लेकिन जब मरेगा तो उसका कोई धन नहीं होगा. अगले जन्म में वह ये नहीं कह सकता कि मैं पूर्व जन्म में भारत में एक बहुत बड़ा करोड़पति था. He will die and he has no access for the wealth he has accumulated in previous life. तो मृत्यु के बाद उसको पूर्व जन्म की जितनी भी संपदा पूंजी है उसको प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं रहता. All of you may be billionaires in previous life, and now you are somehow struggling to do a job and get some salary from some manager. तो आप सभी भी पूर्व जन्म में कोई करोड़पति हो सकते हैं, लेकिन आप इस जन्म में एक कुछ धन प्राप्त करने के लिए इधर-उधर काम ढूंढ रहे हैं. But then the first quality, special quality of this wealth is, this wealth is abhinasi. This wealth is eternal. This wealth can be accessed from lifetimes after lifetimes. तो पहली विशेषता है कि ये जो पूंजी है यह अविनाशी है, यह समाप्त नहीं होती और जीवनों के बाद आप इसको प्राप्त करते रह सकते हैं. And the second thing she explains is kharachana chhote khote. This wealth is you do not have why. In this world you have some wealth, you spend something and then it goes away. But this wealth has no kharach. It is inexhaustible. It is abhyaya. और दूसरी विशेषता यह है कि ये जो संपत्ति है ये कभी भी खर्च नहीं होती है, ये समाप्त नहीं होती है, इसको आप व्यय नहीं कर सकते हैं. And that's why it is inexhaustible. It doesn't get
vyaya, or it doesn't have, it doesn't diminishes. और इसीलिए ये कभी भी कम नहीं होती है, यह अव्यय है. And then it says, Chor na loote. This wealth you have no fear that any thief can come and steal it. And you are completely safe when you have this wealth. और तीसरी विशेषता है कि चोर भी इसको नहीं ले जा सकते, इस संपदा को कोई लूट नहीं सकता आपसे, यह हमेशा आपके पास रहेगी, तो आपको कोई भय नहीं. So the third principle is, no thief can steal it. And the fourth one, he says that Sattaki now Kevatiya Sadguru. This wealth has a special quality that it can make you purchase a special boat. और इस संपत्ति की एक विशेषता है कि आपके लिए एक विशेष नाव खरीद सकती है. And what is that boat? This boat has the captain, the spiritual master. और वो नाव क्या है? ये वो नाव है जिसका जो कैप्टन है वो आपके सद्गुरु है. And Bhavasagar tar ao. And this boat can deliver you from this birth and old age, this material world. और ये बोट, ये जो नाव है, वो आपको इस भव सागर से पार ले जा सकती है, आपको जन्म और मृत्यु के परे ले जा सकती है. So it helps you purchase a special boat. And what is this boat? This boat can take you beyond birth and death. तो ये आपको एक विशेष नाव खरीदने में सहायता करती है, और ये नाव क्या है? ये नाव आपको जन्म और मृत्यु के परे ले जाएगी. But then she says, these are all secondary benefits of this special wealth. लेकिन फिर वो कहती हैं कि ये सब तो इसके छोटे स्तर के गुण हैं. इसका गौण्य गुण, secondary benefit. गौण गुण है इसके. These are all secondary benefits. The main benefit, she says that Meera ke Prabhu Giridhar Nagar harasa jasa gao. If you have this wealth, then you will understand, and if you really have this wealth, then always you will be happily going on glorifying and hearing the glories of Lord Shri Krishna and singing the glories of Krishna. फिर वो कहती हैं कि जिसको भी यह धन है, तो वो जन्म जन्म तक भगवान कृष्ण के गुणगान को गाता हुआ जीवन यापन कर सकता है. So this wealth, it helps us to sing and chant the glories of Lord and happily. Yes. तो यह संपत्ति आपको भगवान के गुणगान को जीवन भर करने के लिए सहायता करती है, और वो भी अत्यंत आनंद के साथ. So these are some of the special qualities of wealth, of love of God. तो ये भगवान का जो प्रेम है, भगवान के प्रति जो प्रेम है, उस
की कुछ क्वालिटीज, कुछ गुण हैं, विशेष गुण हैं. And the goal of human form of life is actually to obtain this wealth. Yes. मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो है इस प्रेम को प्राप्त करना. We are talking about Krishna Prem and his sleeping. And in this way, we lose the opportunity to get love for Krishna. तो यदि हम सो जाएंगे तो हम इस जीवन में भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त करने के अवसर को खो देंगे. So we need to understand that what a special quality we have got and what a special gift that we have got. हमें समझना होगा कि यह विशेष कितना विशेष गुण हमें प्राप्त हुआ है और कितना विशेष संपत्ति हमें प्राप्त हुई है. And when we get something special, it is our responsibility to really pay the price for obtaining it. तो जब हमें कुछ ऐसा विशेष मिल जाता है तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके लिए कुछ मूल्य हम अर्पित करें. Generally in this world, people think that the wealth of this world we require to endeavor hard. तो आमतौर पर इस संसार में माना जाता है कि कुछ भी अगर आपको संपदा प्राप्त करनी है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. Just see how people work hard to get some thousands and lakhs of rupees in a month. तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार कुछ हजार या लाख रुपए प्राप्त करने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं. Everyone knows that the wealth that they are earning so hard, they are going to leave everything here and go at the time of death. सबको पता है कि जिस धन को प्राप्त करने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मृत्यु के समय उस धन को छोड़कर उनको जाना पड़ेगा. But how much people are working so frantically hard to get that wealth? लेकिन कितना पागलों की तरह लोग बढ़कर उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं. And when it comes to Krishna consciousness, when it comes to wealth for love for Krishna, oh, everything should be free in the temple. लेकिन जब ये कृष्ण प्रेम की बात आती है तो कहते हैं कि मंदिर में सब कुछ मुफ्त में ही मिलना चाहिए. And I should just get everything freely. और मुझे सब कुछ आप मुफ्त में दे दीजिए. So if the wealth of the world, which is actually not eternal, we have to give up. It has to be, there is so much of price involved. Then how much price has to be involved in getting the wealth of love of God? तो जब इस संसार के इस नश्वर धन को प्राप्त करने के लिए जो आपके पास से चला जाएगा आपको इतना बड़ा इतना मूल्य चुकाना पड़ता है, तो फिर इस धन को प्राप्त करने के लिए कितना मूल्य होना चाहिए. So let us now little bit do from all of you little bit of brainstorm that what are different prices that we need to pay. Yes. तो आप सभी से मैं पूछता हूँ कि आप बताइए कि कौन कौन से अलग अलग मूल्य हैं जो हमें चुकाने चाहिए. Yes. What is the price? Yes. Nidhi Mataji is telling. She has some information about the price. Prabhuji, Hare Krishna, Dandavat Pranam. Yes. Sleep, Prabhuji. Okay, sleep. You have to pay sleep or you have to do less sleep. Less sleep, Prabhuji. Okay, less sleep is the price. Okay. Anyone else? Okay, Dev Malya Prabhu. So we need to remove our ego. Okay, we have to remove our ego. अहंकार का त्याग करना चाहिए. Yes. Anyone else? Okay, Karan Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु.
So we have to give up the association of people who are not helping us. Okay, we have to give up wrong association. Yes. संगति का त्याग करना चाहिए. Anyone else? Yes, Sunita Mataji. Hare Krishna Prabhuji, we have to give our time. We have to give our time. Time is money. हमें अपना समय देना है, समय धन है. Yes. Anyone else? Yes, Mona Lisa Mataji. Hare Krishna Prabhuji, Dandavakana. Prabhuji, we have to give up our material desires. We have to give up material desires. हमें भौतिक इच्छाओं का त्याग करना होगा. What else? Anyone else? Bas this Udharan Krishna Prabhu. Krishna Prabhu. So we have to give up our habits in such lives which they have acquired, but they are unfavorable. Habits, likes, dislikes. Okay, everyone is telling that we have to give up. Is there anything we have to accept also? Okay, Ajay Prabhu. Yes, Ajay Prabhu. You want to say? Yes. Prabhuji, we have to change our lifestyle. Okay, We want to get up early, then we have to eat also light. We have to change lifestyle. Okay, we have to eat less and become like Srinita Das. Okay. We have to give up association of mind and Okay. let it be Who's speaking? spiritual master. Okay, give up mind. How will you give up? We'll die. Associate in the sense listening to the mind and listening to Guru we have to start. Okay, we have to listen to Guru and stop listening to mind. Okay, that's good. Anyone else? Ajay Prabhu, you want to speak something? Yes, Prabhuji, Hare Krishna. Yes. We have to give our earnings to serve of God also. Oh, you have to give our earnings to serve God. What else? Yes, so Krishna Prabhu. Engage our senses according to the Shastra. Engage senses based on Shastra. Yes, anyone else? Hare Krishna Prabhuji. Yeah. Prabhu Pachavevam Yoga Vevam. Okay, control mind and senses. What else? हाँ? प्रभु जी रेगुलर होना होगा हमें अपनी चैंटिंग में अपनी हैबिट्स में रेगुलरिटी बहुत जरूरी है कि आज किया कल नहीं किया Regularity in sadhana. Okay, very good. प्रभु जी ईमानदारी, sincerity. Okay, sincerity. Prabhu ji, we should have full faith in this process. Faith, yeah. Okay, Selja Mataji last. We have to take association of devotees and Vaishnavas regularly. Association of devotees Guru and Vaishnavas. regularly. Yes. Anyone else? Okay, this is last. This was last. Okay, this was last. This is okay. Accept prasadam. Okay. Anything else? It is open the chat box. Okay, Udharan Krishna Prabhu also is raising hand. Sometimes we have to reject our family members also. Okay, we have to reject our family members. Okay. Okay. I don't think we have any one of us are family members like Mirabai had. So let us not. Okay, we have to do seva. Okay, we'll write seva. Okay, definitely we have to do seva. Be ready to serve, spread love for Krishna. Yes, we have to. This is a very nice point. We have to do preaching.
Yeah, so we have to regularly read scripture that is already written. Okay, so all of you have wonderfully come out of different points about what we have to do if we have to attain love for God. Now we will read from Srila Prabhupada's, we'll read from Bhagavad Gita what Krishna is telling what we need to do. Someone came. Okay, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vyavasayatmika buddhi Vyavasayatmika buddhi ekehe kuru nandana ekeha kuru nandana bahu sakha hi anantascha bahu shakha yanantascha buddhayo avyavasayina. buddhayo avyavasayina. Anyone else? Vyavasayatmika buddhi Vyavasayatmika buddhi ekehe kuru nandana ekehe kuru nandana bahu sakha hi anantascha bahu shakha yanantascha buddhayo avyavasayina. buddhayo avyavasayina. Okay, translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation: those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. O beloved child of Gurus, the intelligence of those who are irresolute is many-branched. A strong faith that by Krishna consciousness one will be elevated to the highest perfection of life is called Vyavasayatmika intelligence. Translate. व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब ये है एक शक्तिशाली श्रद्धा, कृष्ण चेतना, शक्तिशाली श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा. व्यवसायत्मिका बुद्धि का. Okay. What did you translate? सबसे जीवन में जो परफेक्शन प्राप्त करने के लिए. Hare Krishna. Let me tell it in Hindi. व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब है कि एक दृढ़ श्रद्धा रहना कि भगवान की भक्ति से मैं जीवन की सर्वोत्तम स्तर पे पहुंच सकता हूं. द चैतन्य चरितामृत स्टेट श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है. Faith means unflinching trust in something sublime. चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि श्रद्धा का अर्थ है कि हमारा एक विश्वास है कि कुछ एक पवित्र संपत्ति के ऊपर, पवित्र चीज के ऊपर एक दृढ़ विश्वास. When one is engaged in duties of Krishna consciousness, he need not act in relationship to the material world with obligations of family traditions, humanity or nationality. जब कोई भगवान की भक्ति और सेवा करता है तो उनका जो ऋण होता है इस परिवार से, इस समाज से और देश से, उस ऋण के तौर पे, दौरे पे वो कार्य नहीं करता है. Fruitive activities are engagement of one's reactions from past good or bad deeds. When one is awakened in Krishna consciousness, he need no longer endeavor for good results in activities. जब कोई कृष्ण भावना में जागृत हो जाता है तो उसको पुण्य कर्म, इस जगत के अच्छा काम करने का कोई जरूरत नहीं रहता है. When one is situated in Krishna consciousness, all activities are on absolute plane, for they are no longer subjected to dualities like bad and good. So जब कोई भगवान की भक्ति करने लग जाता है तो इस भौतिक जगत की
अच्छा और बुरा द्वंद्व से वो ऊपर चला जाता है, और द्वंद्व से ऊपर जाके वो हर समय सही कार्य ही करता है, परम सत्य के दौरे पे स्थान पे वो कार्य करने लग जाता है। The highest perfection of Krishna consciousness is renunciation of the material conception of life. और भगवान की भक्ति का सर्वोत्तम स्तर है इस भौतिक चेतना को त्याग करना। So Srila Prabhupada is telling that the highest perfection of Krishna consciousness is the renunciation of the material conception of life. इस जो भौतिक वृत्ति है हमारी, भोग वृत्ति है कि जीवन का लक्ष्य है कि किस तरह मैं भोग करके आनंद प्राप्त करूंगा, इस भोग वृत्ति को त्याग करना और सेवा वृत्ति को अपनाना, ये भक्ति की सर्वोत्तम स्तर है। This state is automatically achieved by progressive Krishna consciousness. अगर कोई भगवान का भक्ति करने लग जाता है तो ये स्तर अपने आप धीरे धीरे आ जाने लगता है एक व्यक्ति के जीवन में। The resolute purpose of a person in Krishna consciousness is based on knowledge. कोई अगर बताता है कि बाहर के लोग भी दृढ़ हैं और भगवान की भक्त भी दृढ़ हैं, पर भगवान की भक्ति का जो दृढ़ता है वो ज्ञान के स्तर पे है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। A person in Krishna consciousness is the rare good soul who knows perfectly that Krishna is the root of all manifested causes. और ज्ञान क्या होता है? किसको ज्ञान मिल गया है? जो जान चुका है कि भगवान कृष्ण ही जीवन का लक्ष्य है, भगवान कृष्ण ही सारे कारणों के मूल कारण हैं। As by watering the root of a tree, one automatically distributes water to the leaves and branches, so by acting in Krishna consciousness, one can render the highest service to everyone, namely self, family, society, country, humanity, etc. जिस तरह एक पेड़ को हम जब जल देते हैं और जड़ में जल देते हैं, जैसे ही हम जड़ में जल देते हैं पूरा पेड़ में जल संचारित हो जाता है, जीवन संचारित हो जाता है, उसी तरह हम जब भगवान कृष्ण जो इस सारे समग्र ब्रह्मांड के मूल आधार हैं उनको हम सेवा करते हैं तो सारे जीव राशि संतुष्ट हो जाते हैं। If Krishna is satisfied by one's action, then everyone will be satisfied. अगर कृष्ण हमारे कार्यकलापों से संतुष्ट हैं तो हर व्यक्ति हमारे कार्यकलापों से संतुष्ट हो सकता है। अभी श्रील प्रभुपाद बताएंगे कि अभी तक श्रील प्रभुपाद बताए कि किस तरह भगवान की भक्ति सर्वोत्तम है, भगवान की भक्ति में संकल्पबद्ध होके करना चाहिए। देखिए इधर लिखा हुआ है रेजोल्यूट, व्यवसायत्मिका, एक है, मतलब एक ही हमारा लक्ष्य है भगवान कृष्ण की प्रति प्रेम प्राप्त करना, उस तरह करना चाहिए। पर वो दृढ़ निश्चय जो है, दैट डिटर्मिनेशन कैसे आएगा, अभी श्रील प्रभुपाद अंतिम परपोर्ट की अंतिम भाग में बताएंगे। सर्विस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस हाउएवर is best practiced under the able guidance of a spiritual master who is a bona fide representative of Krishna, who knows the nature of the student and who can guide him to act in Krishna consciousness. तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो कृष्ण भक्ति है वो सबसे अच्छे से कैसे हो सकता है जब एक सही सद्गुरु के संपर्क में आके हम उनके कायदे कानून के अंतर्भुक्त होके हम उसको भक्ति को करते हैं। जो अपने छात्र को जानता है और छात्र की नेचर को जानते हुए वो पढ़ा रहा है। As such, to be well versed in Krishna consciousness, one has to act firmly and obey the representative of Krishna. So, दो चीज श्रील प्रभुपाद इधर बता रहे हैं, that one has to act firmly and one has to obey the representative of Krishna. हमको दृढ़ता से कार्य करना है, और क्या कार्य करना है? जो हमारा मन बोल रहा है नहीं,
हमारा मन जो बोल रहा है उसको नहीं करना है, हमको जो हमारे सदगुरु बता रहे हैं, जो हमारे जीवन के कृष्ण के प्रतिनिधि है, वो जो बता रहे हैं उसको करना चाहिए. And the third principle, Srila Prabhupada is telling that one should accept the instruction of the bona fide spiritual master as one's mission in life. So these are the three principles Srila Prabhupada is telling. First, one has to act firmly. Second, one has to obey the representative of Krishna in one's personal life. And third, one has to accept the instructions and the mission of the spiritual master as one's mission in life. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur instructs us in his famous prayers for the spiritual master as follows: Yasya prasadat bhagavat prasado yasya prasadan nagati kutopi dhyayans tuvams tasya yasyastri sandhyam bande guru shri charanarvindam. By satisfaction of the spiritual master, the Supreme Personality of Godhead becomes satisfied. And by not satisfying the spiritual master, there is no chance of being promoted to the plane of Krishna consciousness. I should therefore meditate and pray for his mercy 3 times a day and offer my respectful obeisances unto him. गुरु वर्गों की प्रसन्नता से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, और गुरु वर्गों की प्रसन्नता से अगर नहीं प्रसन्न होते हैं तो भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे, और हम भगवान की भक्ति की और आध्यात्मिकता का सर्वोत्तम स्तर पे कभी भी पहुंच नहीं सकते हैं. इसीलिए मैं मेरे गुरु वर्गों की चरणों को 3 बार ध्यान करता हूं. The whole process, however, depends on perfect knowledge of the soul beyond the concepts of body, not theoretically but practically, when there is no longer a chance for sense gratification manifested in fruitive activities. पर ये सारा जो गुरु वर्गों की शरणागति है ताकि हम भगवान की भक्ति को दृढ़ता से ले पाएं, ये निर्भर करता है कि कितना हम ये निश्चय समझ गए हैं कि हम ये शरीर नहीं जीवात्मा है. So this is a very nice point that Srila Prabhupada is mentioning here, that everything depends on the perfect knowledge of soul. Actually, if अगर कोई सोचता है कि मैं शरीर हूं, तो गुरु वर्गों की शरणागति लेना और भगवान कृष्ण की प्रेम प्राप्त करना, ये सब पागलपन लगता है. और श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो चीज है, हम जो बता रहे हैं कि गुरु वर्गों की शरणागति लेना चाहिए, भगवान की भक्ति की दृढ़ता से करना चाहिए, वो आत्मा के स्तर पे ही समझा जा सकता है. शरीर के स्तर पे इसको समझा नहीं जा सकता है. One who is not firmly fixed in mind is diverted by various types of fruitive acts. And the last point Srila Prabhupada is mentioning is that to be firmly fixed in mind. So these are the 5 things Srila Prabhupada is mentioning in this purport about how can we actually pay the price of becoming serious in Krishna consciousness and getting love for Krishna. Vyavasayatmika buddhi. How to get Vyavasayatmika buddhi. That serious resoluteness in attaining love for Krishna. The first thing Srila Prabhupada is telling, one has to act firmly. हमको सुदृढ़ता से कार्य करना पड़ेगा. और क्या कार्य? जो हमारा मन बोल रहा है नहीं, जो हमारे गुरु वर्ग, जो हमारे भगवान की प्रतिनिधि है हमारे जीवन में, जो वो बता रहे हैं. और तीसरा चीज है, गुरु वर्गों की जो जीवन की मिशन है, उसको हमको अपना जीवन का मिशन समझना चाहिए. और चौथा चीज है, हमारे मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए. और पांचवा चीज है, ये सब कुछ हम कर सकते हैं जब हम समझेंगे कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है. जब तक ये ज्ञान हमको नहीं रहेगा कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, तो गुरु वर्गों की शरणागति हमारे जीवन में कुछ कार्य नहीं रहेगा. हम शरणागति करना भी नहीं चाहेंगे. तो इसीलिए
This is very important. Yes, now Prabhuji can start translating. This is very important that because we have been gifted something very, very special, it is important that we take it very seriously in life. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें बहुत महत्वपूर्ण उपहार मिला है और इसे हमें बहुत गंभीरता के साथ लेना चाहिए. And if I remember when I was taking Dhruva Maharaj's class, in between I had said that from the next section and from the next Bhagavatam classes, we will have some strict rules for attending the classes. तो मुझे याद है कि जब हम ध्रुव महाराज की कथा पर चर्चा कर रहे थे तब हमने कहा था कि जब हम अगला चरण आरंभ करेंगे तो हम थोड़े से कठोर नियमों का पालन करेंगे कक्षा में. Over the years, I am seeing that the material energy is becoming very, 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 very strong and powerful. तो अनेक वर्षों को देख रहा हूँ कि धीरे-धीरे जो भौतिक शक्ति है वो बहुत ही और भी शक्तिशाली होती जा रही है. Previously, when people used to come to me with some problems, I used to see when almost like in 2006 and 7 when I used to do preaching, people used to also come sometimes with their problems. तो जब पहले मैं 2006-7 में प्रचार करता था तब भी लोग मेरे पास समस्याएं लेके आते थे. And in 2006 and 7 when people used to come with problems, there are problems where, oh Prabhuji, I am not able to study or I am not able to focus on my work and all those things. तो जब उस समय लोग आते थे तो उनकी समस्याएं होती थी कि प्रभु जी मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ और इसी प्रकार से उनकी छोटी-छोटी समस्याएं होती. And now in the 2024, almost 18 years have passed, people are coming with such horrible problems that it's unimaginable to be spoken in Bhagavatam class. तो आज 18 साल के बाद 2024 में जो लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं उनको मैं भागवतम कक्षा में वो अकथनीय है तो कहा नहीं जा सकता. Material energy is becoming so powerful, and everywhere there is simply atheism and sense gratification in the most horrible animalistic way. और ये समस्याएं बहुत गंभीर होती जा रही हैं. इसमें भौतिक जो शक्ति है वो भौतिक ऊर्जा बहुत शक्तिशाली हो रही है और इंद्रिय तृप्ति को लेकर Hare Krishna. I have also forgotten. The intensity of doing sense gratification in the animalistic way is becoming so prominent. जानवरों की तरह इंद्रिय तृप्त करने की जो भावना है वो बहुत बढ़ती जा रही है लोगों में. Now as brahmacharis, we say to all brahmacharis, Baba, you read lot of scriptures and take care of yourself, protect and do nice sadhana, a lot of sadhana. तो ब्रह्मचारियों से हम कहते हैं कि भैया बाबा आप अपनी रक्षा करो और बहुत सारे शास्त्र पढ़ो. And don't try to do lot of gymnastics, do this, do that, remain protected and safe. और बहुत सारा इधर उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी रक्षा करते हुए चलो. But as grihasthas, I can understand that all of you have so many duties and obligations that it is very difficult for all of you to increase the quantity of the sadhana. लेकिन गृहस्थ के रूप में मुझे समझ में आता है कि आप लोगों के पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और आपके लिए अपनी साधना को और बढ़ा पाना मुश्किल होगा. Maybe someone who is Banaprastha or retired and their children are settled, it may be possible for them to increase the quantity of sadhana to get more protected from the horrible effects of the Kali. तो जो लोग वानप्रस्थ में प्रवेश कर चुके हैं जिनके बच्चे अपने अपने स्थान पर ठीक से स्थित हो गए हैं उनके लिए शायद संभव होगा कि वो अपनी साधना की मात्रा को बढ़ा सकें और स्वयं को इस भौतिक ऊर्जा से बचा सकें.
But for all of you, those whose responsibilities are not fully taken care, and you have to take care of the children and all those things, it is very difficult to increase the quantity of the sadhana. लेकिन आप सभी जिनके बच्चे छोटे हैं, अभी तक सेटल नहीं हुए हैं, आपके लिए अपनी साधना को बढ़ाना मुश्किल होगा बहुत. And that is how, seeing the condition of outside world and seeing how so many people, wherever I go nowadays, I hear that so many devotees who were so nice devotees are completely got washed out by the effects of material energy. और बाहर जब मैं देखता हूँ इस संसार में इस समय, तो मैंने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे जो भक्त थे, वो इस भौतिक ऊर्जा के प्रवाह में बह गए हैं भक्ति से बाहर. They were definitely, whatever they did, devotional service is still there, but they lost the opportunity to go back this life. तो निश्चित रूप से जो भक्ति उन्होंने की है वो सुरक्षित रहेगी, लेकिन इस जीवन में वापस भगवान के धाम जाने की उनके लक्ष्य हो. So many people who have taken initiation, they have now stopped even, they have started breaking and even eating non-veg. और अनेक लोग जिन्होंने दीक्षा तक ले ली थी, वो अब फिर से उन्होंने मांसाहार करना प्रारंभ कर दिया. So we can simply understand the power of the material energy that we are dealing with in today's world. फिर हम इससे समझ सकते हैं कि आज के समय में भौतिक ऊर्जा कितनी शक्तिशाली हो गई है. And if we really want to remain protected from the onslaughts of the material energy, and if we are grihasthas, we cannot increase the amount of sadhana. So it is important with that we increase the quality of our sadhana. यदि हम अपनी गृहस्थ के रूप में हम अपनी साधना की मात्रा को नहीं बढ़ा सकते, तो सबसे सरल उपाय है कि हम अपनी गुणवत्ता, अपनी भक्ति की गुणवत्ता को बढ़ा दें. Now it is very difficult for devotees who are in grihastha ashram to increase the quantity, but definitely whatever we are doing, we can increase the quality of our Krishna conscious endeavors. गृहस्थों को क्वांटिटी मात्रा को बढ़ाना मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से अपने कृष्ण भक्ति के, कृष्ण भावना के प्रति जो उनका प्रयास है, उसकी गुणवत्ता को जरूर बढ़ा सकते हैं. And that is how I have thought that we will make very, very strict rules in terms of quality, improving the quality of whatever we are doing, whatever little bit we are doing, and expecting from all of you to follow. तो इसीलिए मैंने सोचा है कि हम अपनी कक्षा के नियमों को बहुत कड़ा कर रखेंगे, जो मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूँ उसका पालन करने. And the first principle, Hare Krishna, Indrani Mataji. And the first principle is that all those who want to attain the Bhagavatam classes have to keep their video on for sure. There is no question of attending class, Srimad Bhagavatam class, whether it is in the English class or in the Hindi class, without video on. पहला सिद्धांत है यह है कि सभी को अपने वीडियो को क्लासेस करते समय अपने वीडियो को ऑन रखना है, चाहे हिंदी क्लास हो या फिर अंग्रेजी की क्लास हो. And sometimes some devotees tell me that Prabhuji, I have to go this place, that place, I have this engagement, that engagement. Whenever there is some board meeting, whenever there is something urgent meeting where we have to get some money or we have to, our salary is at stake. So, and then the protocol of the board meeting is we have to keep video on. Will you keep video switched off? Anyone? कभी कभी भक्त मुझसे आकर बोलते हैं कि प्रभु जी मुझे यहाँ जाना है, ये काम है, ये व्यस्तता है, लेकिन आप जरा सोचिए, यदि आपकी बोर्ड मीटिंग हो जहाँ पर आपको आपकी सैलरी भी आपके रुक जाने की संभावना हो क्योंकि आपको अपना वीडियो ऑन करके रखना है, तो क्या आप वहाँ पर इस प्रकार से किसी प्रकार का एक्सक्यूज देंगे? Sometimes devotees say that, oh Prabhuji, I am traveling, I have this. You have to plan your travels, you have to plan your schedule in such a way that
the morning Srimad Bhagavatam class or the evening Bhagavatam class for those who are Hindi, you are fully available in that time. कभी कभी भक्त कहते हैं कि प्रभु जी मुझे यात्रा करनी है, लेकिन आपको यात्रा? इस प्रकार से ट्रैवलिंग, Okay, traveling. लेकिन आपको इस प्रकार से अपने यात्रा के प्लान बनाने पड़ेंगे कि आप इस सुबह की भागवतम क्लास के लिए या शाम की भागवतम क्लास के लिए आप उपस्थित रहें. With video on. वीडियो आपका ऑन होना चाहिए. And no one who keeps his video off will be allowed in the class. If your video is off, then the admin will move you out of the class. और किसी को भी अपना वीडियो बंद रखने की इजाजत नहीं होगी. यदि आप अपना वीडियो बंद रखते हैं तो आपको जो एडमिन है वो आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे. Because if one person keeps his video off, then it becomes a culture that everyone starts keeping video off, and we really don't know what is happening on the other side, and I don't want to take responsibility of such irresponsible students. क्योंकि यदि एक व्यक्ति वीडियो ऑफ कर लेता है तो फिर ये एक संस्कृति बन जाती है कि सब लोग अपना वीडियो ऑफ करने लगते हैं, और मैं इस प्रकार के विद्यार्थी जो कि जिम्मेदारी नहीं लेते हैं उनको मैं अपने. If you cannot take responsibility of keeping the video on and managing a simple schedule once in a week to attend one and a half class nicely, what you will manage your life, what you will chant 16 rounds, what you will follow 4 regularity principle, and what you will go back to garden and what you will do there. और यदि आप एक छोटा सा एक हफ्ते में 1.5 घंटे की एक कक्षा आप अपना वीडियो ऑन करके नहीं रख सकते, तो फिर आप क्या आशा रखेंगे कि आप भगवत धाम जाएंगे, आप 4 नियमों का पालन करेंगे, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे. At least for the batch of Srimad Bhagavatam class which we are taking in the morning and evening, we want to keep it very, very special, very, very specific, only for very, very serious devotees. और विशेष रूप से भागवतम की कक्षा जो हम सुबह और शाम को 2 कक्षाएं कर रहे हैं, उन दोनों कक्षाओं में हम बहुत बहुत गंभीर जो विद्यार्थी हैं, जो भक्त हैं, उन्हीं को रखना चाहते हैं. And the third principle is everyone should purchase some apparatus to hold on, just like this. This is, I think all of you know about this. This takes about 200 rupees. So everyone should purchase this apparatus and to hold your mobile. No one should hold the mobile in the hand, and sometimes I think you are holding in the mobile in the hand and doing something and the mobile falls off and then you are going here and there. You have to sit down peacefully, just like a student sits down when for an online class, when your son and daughter they are reading for IIT JEE exam and all. This exam what you are preparing in Bhagavatam is much, much, much more important and serious than any subject of this world. और आपको एक मोबाइल होल्डर जो मोबाइल का स्टैंड है वो खरीद लेना चाहिए और उस पर अपना मोबाइल रखना चाहिए. कभी कभी भक्त हाथ में लेकर कुछ करने की कोशिश करते हैं, मोबाइल गिरा देते हैं. आप सभी को एक स्थान पर बैठकर कक्षा को अटेंड करना है. जैसे आपके बच्चे जब IIT JEE वगैरह की पढ़ाई करते हैं तो उन कक्षाओं को एक स्थान पर बैठकर मेज रखकर अटेंड करते हैं, वैसे ही आपको इस एग्जाम के लिए, जो कि इस जीवन का, इस संसार का सबसे बड़ा एग्जाम है, उसको पास करने के लिए आपको ऐसे तैयारी करनी है. You have to, everyone has to sit and make notes, because in between the classes it will be interactive and I will ask what we have understood and read. Just like now, I have also started making notes, just to inspire you to make notes. आप सभी को नोट्स बनाने हैं, क्योंकि बीच में कक्षाओं के बीच में मैं भी जो बोला है उसको लेकर प्रश्न करता रहूंगा, और जैसे अभी मैंने भी नोट्स बनाना शुरू किया है. And the fifth principle is couples should join in separate Zoom ID. और 5वां सिद्धांत है कि जो भी पति पत्नी है उनको अलग अलग Zoom ID से ज्वाइन करना होगा कक्षा को. Because we want to take attendance and we want to seriously take attendance.
and that is how, to help the people who are taking attendance, the couples have to join in separate Zoom ID. क्योंकि हम बहुत गंभीरता के साथ अब सभी की अटेंडेंस लेने वाले हैं और इसलिए अलग अलग आईडी से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि जो अटेंडेंस लेने वाले भक्त के लिए सुविधा रहे. And the attendance will be taken regularly and it will be reviewed once in 4 months. और अटेंडेंस नियमित रूप से अटेंडेंस ली जाएगी और हर 3 months. हर 3 महीने में इसके ऊपर एक रिव्यू किया जाएगा. And out of 12 classes in 3 months, minimum attendance that is required is 10 out of 12. और जो 3 महीने में 12 कक्षाएं होंगी उनमें आपकी 12 कक्षाओं में कम से कम 10 कक्षाएं आपको अटेंड की होनी चाहिए. And there is some transcendental punishment if you do not, if you fail in your attendance in a quarter. और एक दिव्य दंड की भी योजना बनाई गई है यदि आप अपने अटेंडेंस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए. And the divine punishment is there will be reward system for those who are extraordinarily good student in the class. और दिव्य दंड ये है कि जो भी बहुत असाधारण रूप से अपनी कक्षाएं अटेंड करेंगे उनको रिवार्ड दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा. And the punishment is those who fail to attend or properly and all those things, they will sponsor the rewards of these good students. और दिव्य दंड ये है कि जो भी उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करेंगे वो अच्छे विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार दिया जाएगा, उसका धन वो देंगे. And when they are sponsoring for the reward of the good students, they will get the blessings of the good students, and that definitely by doing this Vaishnav Seva, they will also become good in attendance. तो जब वो इस प्रकार से सेवा करेंगे तो उनको भी अच्छे विद्यार्थियों का आशीर्वाद मिलेगा और इससे उनका भी अटेंडेंस बहुत अच्छी हो जाएगी. And the 10th principle is the eligibility criteria for attending Srimad Bhagavatam class is one has to minimum be chanting 4 rounds of Hare Krishna and following the 4 regulative principles. और भागवतम कक्षा को से जुड़ने की जो योग्यता है वो है कि कम से कम 4 माला और 4 नियमों का पालन करते हुए होना चाहिए. Because if one is not following the 4 regulative principle and at least chanting 4 rounds of Hare Krishna mantra, then there is no question of understanding Srimad Bhagavatam. He has to first understand the basics of Bhagavad Gita. क्योंकि ये कम से कम दक्षता है, क्योंकि यदि कोई 4 नियमों का पालन नहीं करता, 4 माला नहीं करता है तो भागवतम की कक्षा के लिए वो योग्य नहीं है. उसको भगवत गीता की कक्षा करनी चाहिए. And the 11th principle is we will have only one WhatsApp group called Satsang. And in that WhatsApp group, we will only add, the monitors will only add those people who are ready to comply with all these rules and regulations. और 11वां सिद्धांत है कि केवल एक WhatsApp ग्रुप बनाया जाएगा जिसका नाम होगा सत्संग, और जो मॉनिटर्स हैं केवल उन लोगों को उसमें जोड़ेंगे जो ये सारे नियम पालन करने के लिए तैयार हैं. And this satsang attendance will start at 5:15 a.m. every day, every Sunday. So once in a week, one has to come
5:15 a.m. in the Sunday, whether he is Hindi class or English class. Everyone has to come at 5:15 a.m. on Sunday. So you have to plan your Saturdays, take rest little early so that you can get up by 5:15 a.m. on Sunday morning, every Sunday. और इस कक्षा की जो अटेंडेंस है वो संडे को 5:15 बजे लगाई जाएगी। तो चाहे क्लास में हो या इंग्लिश क्लास में हो, आप सभी को संडे 5:15 बजे उपस्थित होना है। So केवल एक दिन। For Sunday 5:15, those who are attending Hindi class, they will chant from 5:15. So from 5:15 till 5:30, we'll be discussing something on chanting and holy name. 5:15 से 5:30 तक हम चैंटिंग यानी जप और भगवान के पवित्र नामों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। And from 5:30 till 6:30, we will chant together for 1 hour. और 5:30 से 6:30 बजे तक हम एक साथ मिलकर सभी लोग जप करेंगे। And from 6:30, there will be English Bhagavatam class and the Hindi devotees can leave. 6:30 बजे से इंग्लिश की श्रीमद् भागवतम कक्षा होगी। उस समय हिंदी वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी जा सकते हैं। Since we used to have regularly 6:30 morning class and this 5:15 is a new thing, so we will be for the next 6 months not so strict for the 5:15 attendance, but we will be very strict for the 6:30 a.m. attendance. तो क्योंकि 5:15 बजे हम उतना कठोरता से नहीं करेंगे, लेकिन 6:30 बजे से निश्चित रूप से बहुत कठोरता से कड़ाई के साथ सबके अटेंडेंस ली जाएगी, क्योंकि थोड़ा समय लगेगा आप सभी को 5:15 बजे तक के स्तर पर आने में। So there will be a 6 months of time for all of you to adjust your schedules for coming at 5:15 a.m. once in a week on Sunday. तो संडे के दिन आप सभी को 5:15 बजे तक आने के लिए अपनी योग्यता तैयार करने में, अपने शेड्यूल को फिर से मतलब पुनः उसको व्यवस्थित करने में, तो हम उसको 6 महीने का एक कूलिंग पीरियड देंगे और तब तक आपको अपना शेड्यूल व्यवस्थित कर लेना है। And it is expected that from January 1st, 2025, all of us will start directly joining from 5:15 a.m. And from that time onwards, only those devotees will be allowed in the satsang group who are ready to follow 5:15 a.m. attendance weekly on Sunday. और तो 1 जनवरी 2025 से ये अपेक्षा की जाती है कि सभी 5:15 बजे आएंगे और केवल वही भक्त जो 5:15 बजे आने के लिए तैयार होंगे, केवल उन्हीं को सत्संग ग्रुप में रखा जाएगा। And from the next week onwards, we will have strict 6:30 a.m. attendance. और अगले हफ्ते से हम 6:30 बजे की एक कड़ाई के साथ अटेंडेंस लिया जाएगा। And the next principle is, for those who are attending the morning classes, you do not have to necessarily take bath. But you have to at least wash your face and put tilak and sit down for class. तो अगला नियम ये है कि जो सुबह की कक्षा अटेंड कर रहे हैं उनको जरूरी नहीं है कि वो स्नान करके ही आए, लेकिन उनको अवश्य अपना मुंह धो के और तिलक लगा के आना होगा। And tilak and washing face is compulsory. और ये It's not that you're sleeping and on the bed you have switched on your Zoom and you're sleeping. Actually, it is an offense that the guru is sitting and giving class and you are sleeping in the bed or doing whatever you want to do and join the Zoom and in your own world. Then why I have to struggle so much? I will give my time and energy to only those serious people. तो ऐसा नहीं होगा कि आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं। ये एक्चुअली ये अपराध, एक गुरु अपराध है कि आपके गुरु आपको पढ़ा रहे हैं और आप अपने बेड पर लेट रहे हैं। तो मैं केवल अपना समय उन्हीं भक्तों को देना चाहता हूँ जो बहुत ईमानदारी के साथ भक्ति कर
In case of some medical emergency, it can be reported to the monitors. If in case there is a medical emergency or some very, very great emergency because of which you cannot attend class, it has to be reported to monitors, and the monitors will assess whether it is actually an emergency or not, or it was a mismanagement of your schedule. और यदि आपको कोई मेडिकल ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो आपको मॉनिटर को अपने बताना पड़ेगा और मॉनिटर उस पर निर्णय लेंगे कि ये जो है मेडिकल इमरजेंसी है या फिर आपने अपने शेड्यूल को ठीक से व्यवस्थित नहीं किया है. And the next principle is everyone, those who are attending this satsang and attending classes, has to be in some way or other in some reading groups. और अगला नियम है कि जो भी कक्षाएं कर रहे हैं सबको किसी न किसी रीडिंग ग्रुप में होना ही चाहिए. No one is allowed in this satsang group if he doesn't want to be a part of the book reading group. और इस सत्संग ग्रुप में जो बुक रीडिंग ग्रुप का पार्ट नहीं होना चाहता है उसको इस सत्संग ग्रुप में कोई जगह नहीं है. And there will be also an attendance for this book reading group. और पुस्तक अध्ययन के जो समूह है उनमें भी निश्चित रूप से अटेंडेंस ली जाएगी. And there also a minimum criteria of 10 in 1 quarter is allowed. और उसमें भी 3 महीने में यानी 12 कक्षाओं में से 10 कक्षाएं आवश्यक है. And all the monitors will be taking attendance. और सभी मॉनिटर्स को अटेंडेंस लेनी पड़ेगी. I don't think if I write more rules, only 1 or 2 students will qualify. But it is important that we keep at least one class very, very reserved for serious practitioners and see to that they are wanting to go back to Godhead. Otherwise, it is injustice by mixing serious people and not so serious people. बहुत जरूरी है कि हमें कम से कम एक कक्षा ऐसी रखनी चाहिए जिसमें सारे भक्त बहुत गंभीर हों और यह ठीक नहीं है यदि हम गंभीर भक्तों को गैर जिम्मेदार भक्तों के साथ रखेंगे. Because serious people may want to practice bhakti and complete their bhakti in this life only. So I need to also plan to give to them in that way. क्योंकि जो गंभीर भक्त हैं वो इसी जीवन में अपने भक्ति करना चाहते, भक्ति करके भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं और मैं उसी प्रकार से उनके लिए योजना बनाना चाहता हूँ. And for those who are little not serious, they're looking around to the material world now also and thinking maybe Prabhuji say also I'll hear and I will also see material energy. For them, we will create some another group where they can have little material energy also, Krishna also, everything also, and it will be a light group, just like there is Uber and Uber Light. It's light group. जो इतना गंभीर नहीं है भक्ति के प्रति, वो थोड़ा भक्ति करना चाहते हैं, थोड़ी भौतिक ऊर्जा चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए दूसरा ग्रुप बनाया जाएगा जिसको हम लाइट रखेंगे, जैसे उबेर लाइट होता है और उबेर होता है. So everyone is having opportunity to advance in Krishna consciousness, but there has to be segregation. Who wants to advance at what speed? तो सभी को कृष्ण भक्ति में विकास करने के लिए सबको मौका है, लेकिन हमें गंभीर और जो उतने गंभीर नहीं है भक्तों को अलग अलग समूहों में रखना पड़ेगा. Those who are thinking that it is too much, these rules and regulations I cannot follow, they can join the light group which happens at 11 a.m. every Sunday in the morning. तो जिनको लगता है कि ये बहुत ही कड़े नियम बना दिए गए हैं, तो उनसे निवेदन करते हैं कि वो रविवार का 11 बजे का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेंगे, वो लाइट ग्रुप रहेगा. There is no light Hindi sessions. There is only light English. तो लाइट इंग्लिश ही सेशन है केवल, लाइट हिंदी सेशन नहीं है. So we expect that all the Hindi devotees have to be serious and there is no light option available for them. तो हम ये सबसे अपेक्षा करते हैं कि
हिंदी वाले जो है बहुत गंभीर रहेंगे, ये कोई तो And for those who want to be serious, for them it is 5:15 a.m. every Sunday morning. और जो गंभीर रहना चाहते हैं उनके लिए है संडे 5:15 बजे सुबह, And 6:30 is class for English, and 5:30 Tuesday is class for Hindi. तो संडे सुबह 6:30 बजे इंग्लिश है और मंगलवार को 5:30 बजे शाम को हिंदी क्लास है। And the last thing is there will be every quarter some assignments and assessments. और अंतिम है कि हर तिमाही के अंत में एक असाइनमेंट रहेंगे और एक परीक्षा रहेगी And assessment। there will be special rewards also. Apart from attendance rewards, there will be special rewards for those who will do the assignments and assessments successfully, and they will score very good nice scores. और जो अच्छे से अपने असाइनमेंट करेंगे और जिनका अच्छे से जो है परीक्षा होगी तो उनको स्पेशल एक विशेष पुरस्कार दिया जाएगा जो अटेंडेंस पुरस्कार से अलग है। So I repeat, as I was telling, that the material energy is becoming very strong, and it's becoming very difficult for devotees to practice the right principles until unless if they are not becoming serious. It is being observed that they are not able to follow the regulative principles and chanting. तो मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ क्योंकि भौतिक शक्ति भौतिक ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती जा रही है और भक्तों के लिए 4 नियमों का पालन करना और जप कर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। And that is how for grihasthas it is practically impossible to increase the quantity of their commitments to Krishna. और जो गृहस्थ भक्त हैं उनके लिए भगवान के प्रति अपनी साधना की मात्रा को बढ़ा पाना मुश्किल है। Just as we are advising our brahmacharis to increase the quantity of their sadhana. जैसा कि हम अपने ब्रह्मचारियों को सलाह देते हैं कि आप अपनी साधना को बढ़ा दीजिए। But for grihasthas, since it is not possible, that's why the principle of improving the seriousness and quality for whatever commitments they are giving is important. तो गृहस्थों के लिए मात्रा बढ़ाना मुश्किल है तो उनके लिए अपना जो समर्पण है और जो अपनी गुणवत्ता है उसको बढ़ाने का। And these are the 18 principles which we have decided so that the quality of our classes and seriousness is improved. तो ये जो नियम है वो हमने 18 नियम है वो हमारी गुणवत्ता को बढ़ाने। So in the next 5 minutes I am going to do the quick revision of these 18 things. The first one is compulsorily everyone has to switch on their video. और पहला है कि सबको अपना वीडियो ऑन करके। And the video is not on, you will be removed by the admin from the Zoom session. और यदि आपका वीडियो ऑन नहीं है तो एडमिन आपको जूम सेशन से हटा देगा। Admin may ask you a little bit of question, please switch on your video 2 times, and if after 2 times you have not switched on, you will be removed. और यदि आपने दो बार आपसे एडमिन पूछेंगे कि आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, यदि आपने नहीं किया तो आपको फिर हटा दिया जाएगा। And this class, which is Srimad Bhagavatam class, which happens in the English for 6:30 in the morning and 5:30 for the evening on Tuesdays, this is only for very, very serious devotees. और ये जो कक्षा सुबह 6:30 बजे से इंग्लिश में संडे को और मंगलवार को जो 5:30 बजे शाम से हो रही है वो केवल गंभीर भक्तों के लिए है। So everyone has to purchase this 200 rupees worth little bit of mobile holder so that you can peacefully keep your mobile on that and make nice notes for the class. तो सभी को अपना मोबाइल होल्डर एक खरीदना है जिसमें आप अपना मोबाइल रख सकते हैं और आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं। And someone is using his laptop, then it is mobile holder is not required. और यदि कोई लैपटॉप लेके कर रहे हैं तो उनको मोबाइल होल्डर की जरूरत नहीं है। And there will be interactive session and I will be asking questions in between, so you have to compulsorily make notes
in your own language, Hindi, English, whatever, so that you can answer those questions in the class. और क्योंकि मैं बीच बीच में प्रश्न भी पूछूंगा, तो सभी को अपने नोट्स बनाने हैं आपकी अपनी भाषा में. Couples should join in separate email ID so that we can take attendance properly, and there I can understand who all have come, because for me it's not a couple, it's one single student. और जो भी पति पत्नी है उनको अलग अलग जूम आईडी से ही ज्वाइन करना है, ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन आया है. और मेरे लिए आप सब आप पति पत्नी नहीं, आप अलग अलग स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी. Attendance will be reviewed every 3 months, once in a quarter. और हर 3 महीने में अटेंडेंस का जो है उसको रिव्यू किया जाएगा. There will be 12 classes in a quarter, 3 months, and 4 class in a month. So out of 12 classes, the minimum attendance for you to continue in the next quarter required is 10 classes. तो क्योंकि एक तिमाही में 12 क्लास होंगी, तो उसमें से कम आपकी 10 क्लास आपको किया होना चाहिए. There will be a divine punishment for those who are failing to have to do the attendance, and that punishment is there will be some rewards given for the good students, and you have to sponsor those rewards. तो एक दिव्य दंड की योजना बनाई गई है कि आपको जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो अच्छे से सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, उनको आपको पुरस्कार देने के लिए स्पॉन्सर करना पड़ेगा. But if one is too much having 1 or 2 quarter, 3 quarter for 4 months, 6 months, he is not able to come to the attendance level, then I will humbly ask him to leave the group. और यदि 2-3 क्वार्टर के बाद भी कोई नहीं कर पाता अपनी अटेंडेंस मेंटेन, तो मैं उनको विनम्रता से निवेदन करूंगा कि आप अपना ये ग्रुप छोड़ दीजिए. Just like in any school or any teacher, the teacher asks the students to leave the class. जैसे कि किसी भी विद्यालय में जो अध्यापक होते हैं, वो अपने विद्यार्थी से कहते हैं कि कृपया आप इस कक्षा से चले जाइए. And the minimum qualification for joining this class is chanting 4 rounds and following the 4 regulative principles. और जो योग्यता है वो ये है कि 4 माला करते होना चाहिए और 4 नियमों का पालन करना. So there will be only one WhatsApp group. The previous WhatsApp groups will be dissolved, and this WhatsApp group will be called as Satsang. और केवल एक WhatsApp ग्रुप होगा जिसका नाम होगा सत्संग, और बाकी पुराने WhatsApp ग्रुप्स को हटा दिया जाएगा. And the attendance for this WhatsApp group will start from 5:15 a.m. on Sunday. और 5:15 बजे संडे सुबह जो है अटेंडेंस लगा करेगी. And 5:15 to 5:30 will be chanting Sistastakam and discussing on holy name. और 5:15 से 5:30 तक शिक्षाष्टकम गाएंगे और होली नेम पर और चैंटिंग पर चर्चा करेंगे. And from 5:30 to 6:30 will be 1 hour chanting together. और 5:30 से 6:30 तक 1 घंटा सभी लोग जप करेंगे. With video on. सबका वीडियो ऑन रहेगा उस समय. And at 6:30 there will be English Srimad Bhagavatam class, and the Hindi devotees can leave. और 6:30 पर इंग्लिश श्रीमद् भागवतम क्लास रहेगी, और उस समय हिंदी वाले भक्त जा सकते हैं. Because we are accustomed to 6:30 attendance and 6:30 class, and we are not accustomed to 5:15 a.m. class. That's why there will be a 6 months of cooling period, and from 1st January 2025 the attendance at 5:15 will also become strict. तो क्योंकि अभी हमारी आदत नहीं है 5:15 बजे उठने की, 6:30 बजे की आदत है, तो हम 6 महीने का कूलिंग पीरियड देंगे, और 1 जनवरी 2025 से 5:15 बजे से अटेंडेंस पढ़ाई के साथ. It is not necessary that everyone has to take bath and come for 5:15 a.m. But it is better if we take bath. But even if we have not taken bath, we have to wash our face and apply tilak and come for the class. तो सबसे अच्छा होगा कि यदि आप स्नान करके आए और तिलक लगा के आए, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आपको मुंह धोकर और तिलक लगाकर कक्षा अटेंड करनी होगी. And in case of some medical emergency for missing the classes, one has to report to the monitor. और यदि आप किसी मेडिकल इमरजेंसी के कारण क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे, तो आपके मॉनिटर को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा. And if it is not reported to the monitor, it will be considered absent only. और अगर इनको नहीं बताया गया मॉनिटर्स को, तो इसको एब्सेंस माना जाएगा, अनुपस्थिति. And just like the reading, the classes are compulsory. Similarly, everyone in the satsang group who wants to attend class Bhagavatam has to be there compulsorily in some reading groups. और जैसे जितना भी
भक्त हैं उन सभी को बुक रीडिंग ग्रुप में होना आवश्यक है. And there will be also similar attendance of 10 by 12 minimum for the reading groups. तो रीडिंग ग्रुप के लिए भी 10 क्लासेस 10 रीडिंग सेशंस होने चाहिए 12 में से. And for those who are thinking that these remaining so many rules and regulations are too difficult and they want a simple version where they can switch off their video and just hear whenever they want to come they can come, whenever they want to leave they can leave, there is a light version of this class which will be a different class on Bhagavad Gita at 11 a.m. on Sunday. तो जिनको लग रहा है कि ये सब नियम बहुत ज्यादा मुश्किल है तो उनके लिए एक लाइव क्लास भी रहेगी जो है संडे को 11 बजे से गीता की, वो आप सब उसमें ज्वाइन कर सकते हैं. But it will be only in English. लेकिन वो केवल इंग्लिश में ही होगी. And every quarter there will be some rewards given for those who are doing attendance and for those who have completed assignments and those who have written quizzes and those who have got very good marks. और प्रत्येक तिमाही में जिन्होंने अच्छा अटेंडेंस दी है और जिन्होंने असाइनमेंट और अच्छे से जिन्होंने परीक्षा दी है, अच्छे मार्क प्राप्त किए हैं, तो उन सभी के लिए अलग-अलग रिवॉर्ड होंगे. And if anyone has felt offended because of all these rules and regulations, I beg forgiveness at their lotus feet. I have no intention to hurt anyone because of these announcements. अगर किसी को मैंने जो अभी बोला है सब बुरा लगा हो तो मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ. मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता. I am not denying anyone for attending class because who am I to deny anyone for the class? I am just trying to segregate those who are really want to become serious and really want to focus very nicely from those who want a little bit of light version of spirituality. तो मैं केवल जो गंभीर भक्त हैं जो इसी जीवन में भगवान के धाम जाना चाहते हैं उनको अलग सुविधा देना चाहता हूँ और जो थोड़ा कम साधारण रूप से भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए उनको मैं अलग रखना चाहता हूँ. And so the pro classes will be an accelerated way so we can complete fast and we will also discuss some serious topics. तो जो प्रो कक्षाएं हैं वो त्वरित गति से होंगी और उनमें हम और भी गंभीर पर चर्चा प्रारंभ करेंगे. And as far as YouTube links are considered for the pro classes, they will not be available. They will only be available after 1 quarter is over. Only on demand basis and it will be a private link. तो जो भी वीडियो है YouTube पर ये इन कक्षाओं के वीडियो नहीं आएंगे, 1 क्वार्टर के बाद आएंगे और वो भी प्राइवेट होंगे. तो जिनको चाहिए वो 1 क्वार्टर के बाद मांग के ले सकते हैं. मतलब after 1 quarter it will be published, but we will publish it only for private. Those who are attending the group will have email IDs. If you join in your email ID, then only you can access the video. तो हम एक तिमाही के बाद ये पब्लिश करेंगे इन वीडियोस को और उन लोगों को जो ज्वाइन करेंगे उनको ईमेल आईडी देनी पड़ेगी और उस ईमेल आईडी से उनको लिंक मिल जाएगा. Anyone has any question? Please let us know. Hare Krishna Prabhuji. Yes, Hare Krishna. Prabhuji एक भौतिक सुझाव है. Yes. ये है कि जो मोबाइल स्टैंड की आप बात कर रहे हैं वो 200 रुपया नहीं 89 रुपीज में मिलता है. Okay. 89. Okay, no problem. I thought of purchasing something which will stay for 3, 4, 5 years. But 89. It's a steel one. Steel one. Steel cover. I don't know when. Yes. Anyone else? Yes, Sweta Mataji. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat, please yes. be merciful to all of us कि आप जो नियम बनाए हैं वो हम कर पाए प्रभु. Yes. So if someone is facing difficulty in getting up and all, so it is an opportunity to take help from other Vaishnavas who get up in the morning. Those Prabhujis who have difficulty in getting up, they should tell other Prabhujis, please wake me up. At least once in a week, we have to get up in the morning. Srila Prabhupada said that one should not sleep after 4 a.m. compulsorily if one wants to go back to Godhead.
and our standard is 5:15 a.m. once in a week. How much you want me to reduce the standards? Srila Prabhupada is so merciful. I have reduced my standards so less. Srila Prabhupada, you read his books, hear his lectures. He has clearly said, whether one is a grihastha, whether one is a brahmachari, he has to get up at 4 a.m. and attain the Mangalarti every single day. But for all of you, it is very simple. On Sunday, though every day I am chanting, you all can join at 5:15 a.m. in the morning, but at least on Sunday it is compulsory. Okay? Hare Krishna. Yes, Uddharan Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu. The new devotees who are already doing Gita classes and want to advance here, so what's the process for them? So they can be told about there is pro, there is light, which one you want. So whatever. And coming from the next class, they can join? Yes, they can join. From next class, we'll be starting the lessons from past times of King Bena and King Pruthu. So they can join. But they have to be clearly told about these 18 rules, which we will be also putting it on the groups. Okay, Hare Krishna. Yes, Poonam Mataji. Prabhuji, I am sorry I missed the last point, like the video will be uploaded. Yeah, so the video will be published in a private mode as soon as the class gets over. So only those devotees who are in the group and who will be given that access, and they can only access. And after 3 months, it will get into public mode. Okay? Hare Krishna. Yes, Devmali Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Dandabad. Prabhuji, what about this situation, like it can happen, like sometimes after while doing the classes, maybe the power cut can happen, okay? Or sometimes it happens like after half of the class, people get the switch off their video. Delay. So everything, there will be an attendance person who will be noting down everything, how much you switched on your video, how much, everything will be noted down. And if power cut is there, it is your responsibility to inform the monitor, not the monitor's responsibility. Okay? So you will be given, like, if imagine 50% of the class your video was off. So it will not be allowed only. As soon as you keep your video off for 5 minutes, you will be given message, please switch on your video. And then if you are not switched on, you will be removed. Or you are not giving any valid reason. Oh, Prabhuji, I have got urgent washroom. Oh, Prabhuji, I just now fell down from the table and I hit my head and then blood is coming. So some valid reason you have to give. I think these are all very, very unpredictable, and probability of these events will be almost very less. ऐसे होना नहीं चाहिए कि कोई क्लास करते करते कुछ हो गया, खून निकलने लग गया, गिर गया, ये हो गया, सुसु लग गया. 1 hour क्लास में आपको सुसु लग रहा है. I'm not feeling like passing water. So all of you also can sit without feeling an urge for passing water and clearing. And I think this much is possible. And if power cut happens, it's an unusual thing we can report back. Yes, Kushal Bihari Prabhu. तो हमारे ऑफिशियल टूर्स हो जाते हैं कभी कभी, और उसमें वो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको प्लान करना कि कितने बजे हम ट्रैवलिंग पे जाएंगे. तो जितना बजे बोला जाता है उतने बजे निकलना पड़ता है. तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? Mostly offices are closed on Sundays. नहीं, टूर्स हो जाते हैं. Yeah, so if the tours are there, then it has to be reported to the monitor. So, but I don't think that would be a great problem, because no tour happens 6:30 in the morning. फ्लाइट पकड़ने जाना पड़ता है. Okay, that's different thing. That I think that would be maybe once in a year that will happen. So anyway, if that happens also, the attendance criteria has 2 classes you can miss. So you have some buffer, don't worry. Yes, Dhruv Prabhu. Oh, so many questions.
Hare Krishna. Yes, Prabhu. Your voice is not audible. I think you have to. Book reading. Book reading. Not audible. Can anyone say, Kushal Bihar, what Prabhuji is saying? You send in, you write in chat. Write in chat. You write in chat, and I am taking another question. Okay? So you write in chat. Or Bhisma, you call Prabhuji and find out the question. Okay, yes, Selja Mataji. You write in chat. Yes, Selja Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। Yes. प्रभु जी, हमारे जो रीडिंग ग्रुप है, मतलब हमारा जो विशाखा ग्रुप है जिसमें सब हिंदी में ही है मोस्टली, उसमें से 3-4 माता जी का यही है कि वो संडे क्लास मॉर्निंग वाला अटेंड करना चाहते हैं, बट इंग्लिश थोड़ा सा वो बोल रहे हैं, अगर उसको जारी प्रभु हेल्प करें, हिंदी में भी हो जाए या तो इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके प्रभु जी बोल दें, तो उनको इवनिंग में क्या होता है, कभी कभी कोई आ जाते हैं, शाम को कहीं निकलना पड़ जाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो वीडियो ऑन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो वो बोल रहे थे इंग्लिश क्लास भी हम अटेंड करना चाहते हैं, बट थोड़ा सा अगर हिंदी में भी मिक्स हो जाए या इजी इंग्लिश हो जाए तो दे विल जॉइन इंग्लिश क्लास। I don't use any very specific very words that no one can understand. My English is very simple, very simple. I never use, I don't know also a lot of words. The book may be different. When I am writing, it's a different thing. I have to think for a different audience. But I think my English, I never use any very tough words. Yes. So ask them to attend the class. If they're not able to understand, we'll see. But translating it is a very, very tough thing. Because once you start translating, you get half of the time for the class. So translation will not do. We'll have pure Hindi and pure English. And English I will keep very simple, very simple. Okay? Okay, ये कर सकते हैं ना प्रभु कि वो इंग्लिश क्लास कर ले, क्योंकि इवनिंग का क्लास नहीं कर पाते और रिकॉर्डिंग सुन ले समझने के लिए बाद में, ऐसा कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग मिलने वाला है, रिकॉर्डिंग मिलेगा ना, जो लोग सीरियस है उनको मिलेगा। उनका ईमेल आईडी देंगे तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। Okay? If they provide their email ID, everyone has email ID because everyone uses Android phone. So Android phone compulsorily you have to have an email ID. So if they give that email ID, then they will get the private. They'll be able to open the link. Okay? Yes, Sunita Mataji, then Nidhi Mataji. Oh, so many questions. Okay, Sunita Mataji. Na Dandabad. Prabhuji, as already we are having Rasmalan class on Sundays, so with great difficulty I am doing the class in the morning. But now this 5:15 फिर से जो chanting का भी इसमें add हो गया है, so from 5:15 to 9:15 we have to attend the class in chanting as well. Yeah. So I am feeling it will be like a bit difficult for me to. Yeah, so that is how we have given 6 months of time to adjust to the schedule. You don't have to come right away at 5:15. But you have to do that. How many rounds you are chanting every day? 10 rounds. 10 rounds. It takes about 1.5 hours to chant the 10 rounds. So at least once in a week, if you chant it together, then you will get some strength. If you really want to have strength, we have to chant in a continuous sense. So you have to make this habit. And this is the nature of the mind. Mind, the nature is, it creates limitations. Initially, when you started chanting 1 round, what your mind were telling? Impossible. Correct? And now 10 rounds, the mind is telling possible, and 16 rounds, impossible. Previously, when you would have heard 6:30 morning, I have to attend class, impossible. Now 6:30 has become possible, 5:15 has become impossible. And that 5:15 will also become possible. Keep my words, if you try, slowly, slowly. And that is why I have understood, that's why we have given 6 months of ample period of time. If every month you reduce 5 minutes,
then you will be able to reach 515 at the end of the year. So the mind also thinks like that. So you have to make a practice. No one is telling that right away you have to come for 515. From 1st January 2025, we'll make 515 attendance strict. But right now it will be 6:30 attendance strict. Okay? And it will be possible. One round was not possible. Now 10 rounds are possible. Similarly, 16 rounds will be possible. Similarly, chanting will be possible at 5:15. Not just chanting at 5:15, everyday chanting at 5:15 will also become possible. What is not possible if one tries? And what is not possible if one has the mercy of Guru and Krishna in life? That's why Krishna is called Kartum Akartum Anyatha Kartum. Krishna can do, Krishna can undo, and Krishna can do everything and undo everything. That is power of Krishna. Kartum Akartum. Who is Iswar? Kartum Akartum Anyatha Kartum Sarvato Kartum. He can do everything, he can undo everything, he can do and he can undo everything he can do. So by taking his setup, one is possible to do everything. Okay. Yes, Sanjukta Mataji. Nidhi Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Yes. Prabhuji, Sunday is not holiday for my Prabhu. So, anyways, I am struggling every Sunday, last portion of the class, because I have to make the breakfast and lunch box ready before 8-10 a.m. Prabhuji. So, during the question answer time, so you have to, Saturday evening only, you have to prepare, you have to cut the vegetables, keep in the fridge and prepare everything, and ask your Prabhu also that Sunday morning the prasadam will be very light, which will be simple. Little bit of austerity is also required. So the simple prasad you can easily make, right? And check if Prabhu can come for the Sunday lunch prasadam, so that you do not have to cook the breakfast and lunch together. So make some adjustment, think about it, and cut the sabjis in the Saturday evening. Take rest Saturday evening early, so that Sunday you can get up before 5:15 and get up at 4:30 and cook, right? So what not is possible if one thinks. Imagine 5:15 there is a flight, you have to catch the flight. Then what you will do if you have to catch flight at 5:15? Then you will get up at 4. Then you will cook something because you have to prepare some breakfast. What you will take in the flight, you cannot take in outside airport. So similarly, take little early rest and reduce little bit of sleep on Sunday morning. You will not die if you sleep 1 hour less on Sunday morning. You will not die. You will not die. Rather, your Ayushya will increase because you are following the instructions of Guru. Your lifespan will increase. You will become more Sobhagyavati because you are following principles, spiritual principles. So one day, little bit, 1 hour, 1.5 hour in a week, if you sleep less, nothing is going to happen. So sleep little less, get up more early, cook, and come for the class. No, Prabhuji, I was asking during question answers. Yeah, so if you have already cooked, then you at 8 o'clock only you can, okay, cook. Already cut the sabjis and everything, and make a light prasad. Whole week you eat very nice opulent prasad, but Sunday morning you make a little bit of khichdi. So how much it takes to make khichdi in the pressure cooker? Hardly 10 minutes, right? You take khichdi. And you will not die if you take khichdi in the morning. You will not die. Neither your Prabhu will die. Rather, your health will improve because of doing little bit of dieting. So tapo divyam putraka yena sattvam suddhyed yashmat brahma saukhyam tu anantvam. Rishabdev says to his sons in 5th canto, tapo divyam. One has to practice austerity in life. Tapo divyam. For getting something divyam. Tapo divyam putraka. Hey putras, oh my sons, one has to practice austerity in life.
tapo divyam putraka yena sattvam. By that one will become purified, sattvam. Brahma saukyam tu anantam. If one wants to experience devotional happiness of living with Krishna, one has to go through a little bit of tapasya. Okay, and you are not being asked that every day you tapasya. Every Sunday will be a little bit of tapasya in the morning, and this tapasya is good for you, right? So many tapasya you would have done for preparing for your exams, yes? Yes, How many tapasya would have done to get into TCS job which you are doing? How many tapasya would have done to get to do all the UPSC preparation you are doing? Yes? How many khichdi you have taken? Now you take little bit of khichdi for Krishna's sake. You lose little bit of 1 hour of sleep for Krishna's sake. Not every day. Once in a week. Okay? All the best. Tapo divyam putraka yena sattvam. 5th canto, 5th chapter, 1st verse. Please, all of you can refer. Tapo divyam putraka yena sattvam. If you want to achieve Krishna in life, one has to do divine austerities. Okay, 551. Yes. Nidhi Mataji. Prabhuji, for the next 2-3 classes, it will not be possible for me to put applied tilak. So is that excusable? I don't think why not apply, but whatever it is, you check with Preeti Mataji, your monitor, okay, and get it clarified. But I don't think purchase a tilak and put tilak. What's the problem? No, but Prabhuji, I am outside. I mean, I'm not in Okay. I'm not having tilak with me. Okay. So try to get the tilak as soon as possible. Okay. Yes. Hari Bol, Hare Krishna. Yes, Radhika Mataji from Qatar. Hari Bol, Dandavat. 5:15 India time was 2:45 in Delhi. Yes. So it is reception only for this time. 2:45. It would be like one day you have to. You will get an experience of living like a brahmachari in ashram. 2:45 a.m. you will get up. I think you would get every quarter a special award, the 2:45 award. My plan was actually after running it 5:15 timing for almost 1-2 years, my plan was to start the attendance at 3:30 after 2 years and slowly improve it. And go. And you have spoken my words. Yes, where you went? Hare Krishna. Hare Krishna. Radhika Mataji? Yes. So the point is, you see what is practical, because I don't know what is practical, right? But the principle, I think you have understood from the class, that we have to be serious. And nothing will happen if you just sleep 1 or 2 hours less once in a week. Nothing is going to happen. Just take this out of your mind. This is all mental blocks that we have created. This is all mental blocks that is stopping us from attaining Krishna. Oh, I can only chant 1 round. Oh, I can only, I have to sleep 8 hours a day. I cannot get up at 2. Why you cannot get up? You cannot, you can. Everything you can do. Get out of these mental blocks. Everything. If one decides with sankalpa, yes, this is for my good, I will do. One can do. So these are all mental blocks. This mind is keeping us in material world. ये हमारा मन है जो भौतिक जगत में रख रहा है. मैं 16 माला नहीं कर सकता हूं. Do you know my schedule? My schedule is so busy. I can chant 16 rounds, and in Ekadasi I can chant 64 rounds. All of you can do it.
Why you can't do 16 rounds? The only difference is between my schedule and all of your schedule is you have to go and work and I have to attend some meetings. But I am also busy. If I can manage chanting 16 rounds, you can also very well manage. Similarly, if I can get up in the morning, right, every day, so all of you also once in a week get up. Give up sleep. Right? Krishna is waiting. When I will give up sleep, when my devotee is going to give up sleep, Krishna is so happy with Arjuna. Why? Gudakesha. Arjuna's another name is Gudakesh. He had conquered sleep. So, in that way, no one is telling you that don't sleep. We are just telling once in a week, try to reduce. Maybe directly at 2:45 may not be possible. But slowly in 6 months, it will be possible. Possible! I am sure you will be able to do it. Prabhu, another one is, we can give that we can take rest during the lunch time. Okay, we can take rest during the lunch time, but actually we don't require day rest. We may require a nap of 15 minutes or 20 minutes maximum, but we don't require day rest. These are all not required. Human body is not defined like this. We will not die. These are all mental blocks. These are all mental blocks. Come out of them. Nothing will happen. No blood pressure will increase. No heart attack will happen. Rather, everything will get streamlined if you get up early in the morning. Okay. And once in a week, for pleasure of Krishna. Oh Krishna, you are my beloved. So I have given up 1 hour of sleep for your pleasure in a week. Krishna says, wow, kitna bada bhakt hai. Okay. जी अगर हम जल्दी सो जाएंगे तो हमें तो वैसे भी 6 घंटा ही तो करना है, तो 6 घंटा तो जल्दी सो के भी कर सकते हैं. Yeah, jaldi so okay. So that is also there. But there is 6 months. It is possible. I am sure 3 o'clock to 45 and it's like possible. Prabhu Zoom gives subtitle. We can try that feature. I don't know what is subtitle. From where we can get information of joining book reading group. Oh, Dhruv Prabhu has. So we will send you. When you will join the group, Ansuman Prabhu will be the in charge for making everyone join the group and also the monitors. So you contact them, they will add you in some group. Yeah. Yes, Reema Mataji. बोला था कि कुछ हिंदी वाले devotees wanted to join. तो जो आप बोलते हैं उसका सबटाइटल आ जाता है. Okay. So Udharan Krishna Prabhu will help Selja Mataji. Okay? You call her and help her. Okay. Yes, Reema Mataji. Last question. Hare Krishna Prabhu. Yes. प्रभु जी, जो आपका वीडियो आएगा वो ईमेल पर आएगा, तो किससे कौन भेजने वाले हैं, कौन भेजेंगे? वो आपको पता चल जाएगा. आप ग्रुप में जब ऐड हो जाएंगे, ऑल इंफॉर्मेशन आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा. You just have to get added. You will get the link. You will be able to see the link if you have given your email ID. But if you send the link to anyone, no one will be able to see the link. Don't worry. Relax. Okay? You just have to join the group. Satsang. Okay? Jai Srila Prabhupada ki jai. I beg forgiveness from each one of you for demanding something to give up your sleep, to eat little bit of khichdi. I have no intention. I will pray for all of your health, but I am sure that your health is going to improve, spiritual and material, by doing little bit of austerity on Sunday morning. Tapo divyam putraka yena sattvam suddhed yashmat Brahma Saukhyam to Anantam. Let us experience divine bliss. Okay, this is 5th canto, 5th chapter. I think 551. Okay, thank you. I suppose, let me check. I don't want to, generally I remember the verse, but I don't remember the sloka. Yes, 551. Okay.
551 नायम देह देह भाजान लोके कष्टान कामान बिडुजान अरताम. Okay, Hare Krishna. This is 551. Okay, all the best. Hare Krishna. Thank you so much. Srila Prabhupada ki jai. Vancha kalpataru vaishya kripa sindhu vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti vaishnava vrinda ki jai. Vaishnav Thakur ki jai.